हेलो हाँ देखिए आम क्वेश्चन नंबर 7 क्वेश्चन नंबर 7 कौन कही ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर इनवर्टेबल को मैट्रिक्स आमर इनवर्टेबल होउछ मैट्रिक्स आर इनवर्टेबल लाइक एज क्वेश्चन विल गिवन 1 0 0 1 0 0 1 1 1 and 2 minus 1 2 minus 1 तो मैट्रिक्स अच्छी मैट्रिक्स टा इनवर्टेबल और नॉट इनवर्टेबल so invertible means you can check a inverse is exist a inverse is exist a inverse is exist so then a inverse exist means first of all you can find out step 1 step 1 कौन करबा ना determinant of a not equal to 0 the first condition determinant of a not equal that means non singular अच्छा then कौन करबा find the adjoints of a then a inverse is our adjoint a bar determinant of से क्वेश्चन हम कुछ a बा इनवर्टेबल होउची कि नहीं तो चेक करबा केमति जदी a determinant of a not equal to 0 हो तार कोन हिजो एडजॉइंट ए भी फाइंड आउट कर परिबा ए इनवर्स भी प्रोसेस रे फाइंड आउट कर परिबा दैट इज एडजॉइंट ए बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए सो द फर्स्ट कंडीशन इज आवर ए डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 डिटरमिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 सो दैट यू कैन फाइंड आउट द डिटरमिनेंट ऑफ ए ऑफ द मैट्रिक्स इज 1 0 0 1 1 1 2 minus 1 1 बुझल and you can find out the determinant of a like in the process 1 into 1 1 minus 1 बुझी पारछ कि नहीं इटा process to find out the determinant of a of order 3 by 3 first expanding करियो कोन एलम expanding एल मने अछि कि नहीं expanding एलम दा रो 1 due to रो वाले कोन अछि मैक्सिमम 0 अछि so that you can expanding element ता रो 1 द्वारा expanding करिबा then you can find the determinants of a if determinant of a equal to 0 then matrix is not invertible if not equal to 0 then determinant matrix is invertible बुझला तो निजे एटा को खाते रे फाइंड आउट करबो क्वेश्चन नंबर अब देखिबा हम 24 को पढ़ेगा देन नेक्स्ट क्लास में हमें पढ़ेगा लिनियर इक्वेशन को चेक करबा केमति ना कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी हो नेक्स्ट क्लास में देखिबा एबे देखिबा हम कोन क्वेश्चन नंबर 24 Question number 24 will be given a square plus 1 AB and AC a square plus 1 AB AC AB b square plus 1 AB b square plus 1 into BC let's take na BC AC BC square plus 1 and this will be 2 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square मोटा मोटा कर दो तापर नेक्स्ट पढ़ना ठीक है पूछी ना a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square हमें प्रूव करबा कोन the determinant value is equal to 1 plus a square plus b square plus c square so that देखो how to prove अछि केते ना a square plus 1 ab ac अच्छा if प्रॉपर्टी को हम यूज करबा प्रूव करबा कोन करबा
you can multiply a तो a को मल्टीप्लाई करी और a को मल्टीप्लाई करी को ना रो 1 सिमिलरली b को मल्टीप्लाई करी रो 2 and c को मल्टीप्लाई करी रो c so that this will be a b c, that is aq plus a, then a square b, then a square c. सेकेंड ऑर्डर कौन करेंगे ना b मल्टीप्लाई a b स्क्वायर b क्यू प्लस b स्क्वायर c, एंड थर्ड ऑर्डर कौन करेंगे ना c मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज a c स्क्वायर b c स्क्वायर एंड c क्यू प्लस c बुझे कौन करेंगे ना रो 1 रे a मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 रे b एंड रो 3 रे c बुझा अलग नहीं. सेकंड कौन करवा स्टेप है क्वेश्चन नंबर 24 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस बुझा. सो दैट देखो कौन आउटरे को देखो a को मल्टीप्लाई कर ली रो 1 b को मल्टीप्लाई कर ली रो 2 and c को मल्टीप्लाई कर ली रो 3 बुझा. नेक्स्ट पेपर का नेक्स्ट स्टेप जानते कर ली मु a को कॉमन ले ली कॉलम 1 b को टेकिंग कॉमन कॉलम 2 ले b को कॉमन and c को टेकिंग कॉमन ले को कॉलम 3 ले. so abc by abc यूनियन कॉमन है abc, so that 1 by a 1 by b 1 by c taking common is, so that is will be 1 plus a square, this will be a square now b square into c square 1 common is a common is any common is ना b को ले लो a square, so b square plus 1 yes so b c square, then a square b square c square plus 1 is it. so that next तो कल ना रो 1 को इंटरचेंजेस कर ली रो 1 will be changes रो 1 plus रो 2 plus रो 3 रो 1 can changes रो 1 plus रो 2 plus रो 3, that is 1 plus a square plus b square plus c square 1 plus a square plus b square plus c square. Similarly 1 plus a square plus b square plus c square 1 plus a square plus b square plus c square, and ro 2 and ro 3 will be same, that is b square plus 1 b square plus 1 b square c square plus 1. Now we have to check out देखो रो वाले कौन अच्छी 1 plus a square plus b square plus c square 1 plus a square plus b square plus c square also 1 plus a square plus b square plus c square, so that we have to taking 1 plus a square plus b square plus c square. Now this will be 1 1 1, so then b square plus 1 b square c square plus 1, then एबे कोन करबा ना मैक्सिमम को रो रे बा को कॉलम को यूज करबा टेकिंग करबा एंड सेत्री कोन करबा ना 0 को कन्वर्ट करबा एलिमेंट को, so that you can changes column 1 can be changes column 1 minus column 2 and column 2 can be changes column 2 minus column 3. हम कोन करली ना column 1 को changes करली column 1 minus column 2, similarly column 2 will be changes column 2 minus column 3, so that 1 plus a square plus b square plus c square
equal to 1 minus 1 0, b square minus 1 c square 0. So this is 1 minus 1 0, 1 minus 1 1 b square plus 1. Then we can expand it along the process मने रखो हम करें expanding along the row 1, expanding along the row 1. So that 1 plus a square plus b square plus c square into 1 into deleting the first row and third column, remaining element minus 1 1 0 minus 1, so that 1 plus a square plus b square plus c square 1 into minus 1 into minus 1, that is 1 0 into 1 0, that is 1 into 1, so that cancel 1 plus a square plus b square plus c square. This is the proof of our determinant, like it is 1 plus a square plus b square plus c square. Question will be given कौन देख ले से ना a square plus 1 ab ac ab b square plus 1 bc ac bc c square plus 1 is equal to 1 plus a square plus b square plus c square. So this is the proof of our solutions. This is the solution of the given determinants. मुझे लग next देखिए क्वेश्चन नंबर 20 for most important 6 mark का क्वेश्चन कंपल्सरी है. Then for your grammar rules or matrix method. Question number 24 देखो second is तो देखिए 1 1 1 A B C A2 B2 C2 A2 B2 C2 is equal to A minus C B minus C C minus A minus B B minus C, sorry C minus A B minus C A minus sorry B minus C B minus C C minus A C minus A minus B into A plus B plus C into A plus B plus C. Most important question. I B rotate, second B rotate. Paper pose 1 1 1 A B C S2 B2 C2 is equal to B minus C C minus A minus B into A plus B plus C. This determinant value is equal to this. You can prove, self-prove by using the property of determinants. So that you can take it 1 1 1 A B C AQ BQ and CQ. Now this is the 1 1 1, so that you can converting the row 1 into maximum 0. Row 1 कौन करेगा maximum 0 convert करेगा element, so that you can change this column 1 can change this column 1 minus column 2 and column 2 you can change this column 2 minus column 3. Column 1 will be changes column 1 minus column 2 and column 2 will be changes column 2 minus column 2, so that this will be 1 minus 1 0 A minus B and AQ minus BQ. Similarly 1 minus 1 column 2 changes column 2 minus column 2, so that 1 minus 1 0 B minus C and BQ minus CQ. which are rest element is 1 but rest column is C and CQ. Now अच्छा next step कौन करेगा AQ minus BQ BQ minus CQ फॉर्मूला अच्छी नहीं A minus B
ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बी माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी सी. Now expanding this like this 0 0 1 a minus b b minus c a minus b into a square plus ab plus b square. Expanding kale a q minus b q, that is a minus b a square plus ab plus b square. Similarly b minus b q minus c q, that is b minus c into b square plus bc plus cq. Next, देखो हम पहले दिखाओ तो लेफ्ट 0 0 1 a minus b b minus c a minus b a square plus ab plus b square a square plus ab plus b square b minus c b square plus bc plus c square. अच्छा देखो इति अछि a minus b into a square plus ab plus b square into इति अछि केते a minus b. Similarly second column कोन अछि b minus c b square plus bc plus c square. हमें सेति भाई कोन करले a minus b इति अछि कि नै a minus b मल्टीप्लाई कर 0 into a minus b 0. So that we can taking common a minus b into column and b minus c same way in column. So that is 0 0 1 and this is the 1 1 c a square plus ab plus b square. There also a b square plus bc plus c square. Then you can expand it along the now expanding along the row 1 so that a minus b minus c 1 into 1 1 a square plus b square plus ab is b square plus bc plus c square. Now you can solve these determinants a minus b b minus c. देखो इकड़ा बना b square plus bc plus c square minus a square plus b square plus ab. You can solve this or simplify this determinant value like as देखो हम करेंगे ना हम करेंगे a minus b minus c देखो also into a square plus ab plus b square minus b square minus bc plus c square. Online एतिको पाइछु कोन पाइछु ना b square plus bc b square plus bc plus c square minus a square plus ab plus b square. Dayola a square plus b square plus ab and b square plus bc plus c square. Now you can solve a minus b into b minus c equal to b square plus bc plus c square minus a square minus ab minus b square.
अच्छा देखो ये माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विल कैंसल्स सो दैट नाउ तो लगते ना a minus b minus c now c square minus c square equal c plus a c minus a this is c square minus a square c plus a into c minus a plus now bc minus ab now taking common b like as c minus a बुझेला देखो एटी होचे c minus a ये होचे c minus a so that a minus b minus c into c minus a into a plus b plus c this is the proof of the determinants 1 1 1 a b c a b c a q b q c q that is the b minus c minus a minus b a plus b plus c this is the proof of the determinants बुझेला सर कंटिन्यू होता है